Good afternoon, my dear students and learner. In today's video lecture, I will be speaking about WH words of could. से पहले की वीडियो में हमने could के सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के इस्तेमाल को पढ़ा है। आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम बात करेंगे could के WH वर्ड्स इस्तेमाल के बारे में। तो जैसे कि आपको मालूम है कि could का इस्तेमाल भूतकाल संभावना और सामर्थ्यता को बताने के लिए किया जाता है। हिंदी वाक्यों के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आते हैं। तो इसमें इन वाक्यों के बीच में क्या, व्हाट, क्यों, व्हाई, कहां, वेयर, कैसे, हाउ, कितने, हाउ मेनी, कितना, हाउ मच, कहां से, फ्रॉम वेयर, कौन सा, विच वन, किस लिए, फॉर व्हाट, इस तरीके के शब्द वाक्यों के बीच में आएंगे। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम इन शब्दों को लिखेंगे, WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स। उसके बाद हम लिखेंगे could, फिर हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, उसका इस्तेमाल करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, फिर इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का और लास्ट में इस्तेमाल करेंगे अदर वर्ड्स का और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या हुआ स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस could प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स and mark of interrogation. Yes. Now look at some example. तुम वहां कैसे जा सकते थे? How could you go there? राधा तुम्हारी मदद क्यों कर सकती थी? Why could राधा help you? ये लड़के कानन पेंडारी कब जा सकते थे? When could these boys go to कानन पेंडारी? तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्या कर सकता था? What could your brother do for you? वह लड़की इतिहास को क्यों दोहरा सकती थी? Why could that girl repeat history? नेहा लगान फिल्म कब देख सकती थी? When could नेहा watch लगान फिल्म? सरला तुम्हारे लिए क्या कर सकती थी? What could सरला do for you? कितने लड़के कंप्यूटर खरीद सकते थे? How many boys could purchase computer? वह कौन सी फिल्म देख सकती थी? Which film could she watch? तुम किस शहर में रह सकते थे? In which city could you live? राधा तुम्हारे लिए नाश्ता क्यों तैयार कर सकती थी? Why could राधा prepare breakfast for you? वह लड़का बार बार तुम्हारी वीडियो क्यों देख सकता था? Why could that boy watch your video again and again? वह लड़का अपनी कॉपी क्यों फाड़ सकता था? Why could that boy tear his copy? वे लॉकडाउन में क्या कर सकते थे? What could do they during lockdown? राधा कौन सी पुस्तक पढ़ सकती थी? Which book राधा could read? वह तुम्हें कॉल कब कर सकती थी? When could she call you? नेहा मेरा इंतजार किस लिए कर सकती थी? For what could नेहा wait for me? वह लड़का रामायण कब पढ़ सकता था? When could that boy read the रामायणा? तुम्हारे पिताजी तुम्हारी फीस कब जमा कर सकते थे? When could your father pay your fees? तुम्हारे स्कूल के प्रधानाचार्य समय पर क्यों आ सकते थे? Why could the principal of your school come on time? वह लड़की अपने भविष्य के लिए क्या कर सकती थी? What could that girl do for her future? तुम्हारा भाई कल कहाँ जा सकता था? Where could your brother go yesterday? वह पहले प्रयास में IAS क्यों नहीं बन सका? Why could he not be IAS in first attempt? आराधना कल कवर्धा क्यों नहीं जा सकी? Why could आराधना not go to कवर्धा yesterday? वह इस कार को क्यों नहीं चला सका? Why could he not drive this car? तुम्हारे पिताजी तुम्हें 100 रुपए क्यों दे सकते थे? Why could your father give you 100 rupees? वह लड़की नदी में क्यों नहीं तैर सकती थी? Why could that girl not swim in the river? वे लोग बिलासपुर में कहाँ रह सकते थे? Where could those people live in बिलासपुर? इस वीडियो को कौन शेयर कर सकता था?
Who could share this video? वे अंग्रेजी कैसे सीख सकते थे? How could they learn English? तुम्हारे चाचा तुम्हारे लिए क्या कर सकते थे? What could your uncle do for you? वे सेंटेंस कैसे बना सकते थे? How could they make sentences? आराधना समय पर क्यों आ सकती थी? Why could आराधना come on time? मेरे अध्यापक मुझे 100 एग्जाम्पल क्यों दे सकते थे? Why could my teacher give me 100 example? वह लड़की होम ट्यूशन क्यों ज्वाइन कर सकती थी? Why could that girl join home tuition? तुम्हारा भाई कौन सा गाना गा सकता था? Which song could your brother sing? सरिता किस गाने में नृत्य कर सकती थी? In which song could सरिता dance? वह कौन सी टेलीविजन खरीद सकता था? Which television could he purchase? तुम्हारे अध्यापक तुम्हें कौन सा अध्याय पढ़ा सकते थे? Which chapter could your teacher teach you? नेहा रायगढ़ में कहाँ रह सकती थी? Where could नेहा live in रायगढ़? वह अपने देश के विकास के लिए क्या कर सकता था? What could he do for the development of his nation? सरिता रायगढ़ क्यों जा सकती थी? Why could सरिता go to रायगढ़? यह लड़का तुम्हारी वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर सकता था? Why could this boy record your video? वह अपने वीडियो में अच्छी ऑडियो क्यों डाल सकता था? Why could he put good audio in his video? तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कहाँ जा सकती थी? Where could your mother go with you? तुम अपने आप को कैसे बदल सकते थे? How could you change yourself? तुम अपनी अंग्रेजी कैसे सुधार सकते थे? How could you improve your English? वह बार बार अंग्रेजी क्यों बोल सकती थी? Why could she speak English again and again? यह लड़का तुम्हारे साथ कहाँ जा सकता था? Where could this boy go with you? नेहा कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकती थी? In which college could नेहा take admission? तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? How could you do so? वह तुम्हारी वीडियो कब अपलोड कर सकती थी? When could she upload your video? तुम अपने वीडियो को एडिट कैसे कर सकते थे? How could you edit your video? वह अपनी वीडियो को कैसे कंप्रेस कर सकता था? How could he compress his video? वह लड़की आज का काम कल पर कैसे छोड़ सकती थी? How could that girl leave today's work on tomorrow? तुम्हारे अध्यापक तुम्हें कल क्या पढ़ा सकते थे? What could your teacher teach you yesterday? वह अंग्रेजी बोलने के लिए क्या कर सकती थी? What could she do to speak English? तुम इन वाक्यों को कैसे लिख सकते थे? How could you write these examples? नेहा पंजाब कैसे जा सकती थी? How could नेहा go to पंजाब? वह 10 गायें कैसे पाल सकता था? How could he pet 10 cows? वह लड़की अंग्रेजी सीखने के लिए कहाँ जा सकती थी? Where could that girl go to learn English? तुम गारंटेड कोचिंग क्लास में प्रवेश कब ले सकते थे? When could you take admission in guaranteed coaching class? हिंदी मीडियम के विद्यार्थी अंग्रेजी कैसे सीख सकते थे? How could हिंदी मीडियम स्टूडेंट learn English? वह इस काम को कब कर सकता था? When could he do this work? तुम्हारा भाई घंटी क्यों बजा सकता था? Why could your brother ring the bell? राहुल इतिहास से क्या सीख सकता था? What could Rahul learn from history? तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में क्या सोच सकता था? What could your brother think about you? ये तो ट्रांसलेशन की बात हो गई। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड्स आपने सब पढ़ा। अब देखते हैं हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन फॉर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश विदाउट एनी ट्रांसलेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने अपने 0 चैप्टर से 15 टॉपिक जो पढ़ाया था, वो भी आप जो नए हैं इस चैनल में, चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। वसीमुल्लाह खान गारंटेड कोचिंग क्लास, जिससे इंग्लिश से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूं।
Could you talk in English? Basic rule and regulation same होंगे. Could you talk in English? Yes, I could talk in English. No, I could not talk in English. Could you go to Raipur? Yes, I could go to Raipur. No, I could not go to Raipur. Could you please your parents? Yes, I could please my parents. No, I could not please my parents. Could boys talk in English? Yes, boys could talk in English. No, boys could not talk in English. Could you take admission in guaranteed coaching class? Yes, I could take admission in guaranteed coaching class. No, I could not take admission in guaranteed coaching class. Where could Rachna go? Rachna could go to Raipur. How could she pass the exam? She could pass the exam by working hard. Where could you join last year? I could join in Raipur last year. Who could answer this question easily? My brother could answer this question easily. Who could dance in that song? Radha could dance in that song. How many boys could pass the exam in first attempt? 20 boys could pass the exam in first attempt. Which car could she buy? She could buy Audi car. By which car could he go to Allahabad? He could go to Allahabad by Duster car. How many boys could give you positive response? 20 boys could give me 20 positive response. How many girls could answer this question easily? 2 girls could answer this question easily. By which train could they go to Delhi? They could go to Delhi by Rajdhani Express. How many boys could swim in the river? 20 boys could swim in the river. What could your mother prepare yesterday? My mother could prepare rice and pulse yesterday. Who could do that work easily? My father could do that work easily. Who could talk to you politely? My sister could talk to me politely. Where could Radha go for learning English? Radha could go to guaranteed coaching class for learning English. How could Neha cross the road? Neha could cross the road by looking both the sides. How could Neha do that work? Neha could do that work by great practice. How could Neha listen that story? Neha could listen that story on television. Who could do this work again and again? My teacher could do this work again and again. Who could check your copy? Wasim sir could check my copy. In this way, a lot of examples, you can create yourself, you can answer the question asked by someone else. English is very easy, interesting. If you learn it as a language, it will become easy for you. That's why don't understand that is tough language. Take it easy and make it easy, because nothing is impossible in the world. If I can speak English, why can't you? If you compete like this, then definitely you can have a very good command over English. Otherwise, you won't be able to speak English. Confidence is half the victory. So never lose your confidence. If the person like me who has got his education and government primary school and learned ABCD from class 6. After passing 6 to 12, I came to Chhattisgarh, Bilaspur and opened my coaching institution as guaranteed coaching class. At that time, I was only a student of first year, but I used to teach the student of MA English in MP and Chhattisgarh. Student used to come to me. That's why, what is the reason? The reason is that if your concept is clear, if you are confident, if you are not cramming like a parrot, you can do whatever you want. So I think that my students should also work hard so that they could speak English fluently. As I have trained so many students in my offline classes, Hindi medium students are speaking fluent English. So why can't you? If they can, why can't you? You must have the competitive mind. Thank you so much for watching this video carefully. See you in the next video. If you are agree with me, please share, like and subscribe my channel Wasimullah Khan Guaranteed Coaching Class. Thank you.